जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम न विच्छ कृपणाः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और इस बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना रखकर कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं। इसलिए तुम उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते और प्रत्येक कर्म करते समय निरंतर संभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। O Dhananjaya, rid yourself of all motivated activities by devotional service and surrender fully to that consciousness. Those who want to enjoy the fruits of their works, result seekers, make themselves wretched. Action done with evenness of mind is yoga of wisdom. The yogin who is established in the yoga of wisdom is not affected by success or failure. He does not seek fruits for his actions. He had poised reason. His reason is rooted in the self. Action performed by one who expects fruits for his actions is far inferior to the yoga of wisdom, wherein the seeker does not seek fruits, because the former leads to bondage and is cause of birth and death. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ബുദ്ധിയോഗയുടെ ഈ സമഭാവന കർമ്മവിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. ഹേ ധനഞ്ജയ്, നീ സമചിത്തതയിൽ തന്നെ രക്ഷയുടെ മാർഗം തേടുകയും ഈ ബുദ്ധിയോഗയിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും വേണം. കാരണം ഫലത്തിന് കാരണക്കാരാവുന്നവർ അത്യധികം വിനയാന്വിതരാണ്. ഹേ അർജുൻ, ഏതു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കർമ്മത്തിലും അതിൻ്റെ ഫലത്തിലും സ്നേഹവും ആസക്തിയും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം നേടുന്നതിന് കാരണക്കാരായിത്തീരുന്നുവോ അവർ വിനയാന്വിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേക ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിരന്തരം സമചിത്തതയോടെ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള സുഗമമായ മാർഗം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఆగ్రహం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పద్శరణం. నా సద్గురు సందేశం. ఈ సమత్వ బుద్ధి యోగంతో పోల్చినట్టయితే సకామ కర్మ అంటే ఫలితాన్ని ఆశించే కర్మ అత్యంత అధమ శ్రేణికి చెందినది. అందుచేత ఓ ధనుంజయ, నీవు సమబుద్ధితోనే ఉండి రక్షించబడే మార్గం వెతుకు మరియు బుద్ధియోగ మార్గమును ఆశ్రయించు. ఎందుకంటే కర్మఫలానికి కారణమగువాడు కడు దీనుడు. ఓ అర్జున, ఏ మానవులు కర్మలయందు వాటి ఫలమందు మమతను, ఆసక్తిని మరియు కోరికను నిలుపుకొని కర్మఫల ప్రాప్తికి కారణమగుదురో వారు ఎంతో దీనులు. మరి అందుచేత నీవు లేచినా, కూర్చున్నా, నడుస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, నిద్రలోనూ మెలకువలోనూ ప్రతి పని చేయనప్పుడు నిరంతరము సమభావ స్థితి ఎందు ఉండుము. ఇది ఏ కళ్యాణ ప్రాప్తికి అంటే మోక్ష ప్రాప్తికి సుగమమైన ఉపాయము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।